Hello kids, welcome to Let's Crack CBSE 9th and 10th. I am your educator, Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code and here is a small introduction about myself. मेरे बारे में एक बहुत ही छोटा सा introduction यहाँ पर दिया हुआ है. If you want to get to know a bit more about me, you can download the Unacademy Learning app and go visit my profile at this link, Rashmi12 Singh. So kids, what are we going to study in this particular video? So you can guess from these cute pictures over here. Any guesses? So yes, it's very clear. It's very the photos are like you must have seen every time in the school in the fashion fancy dress competition. Kids being dressed like this, and yes, this reveals that today's video is going to be on the early life of Mahatma Gandhi and his political career, the beginning of his political career in India. So I will be teaching you each and everything which is important there for your nationalism in India chapter class 10th. Okay, so before that I will quickly tell you that how you can subscribe on Unacademy. Once you subscribe on Unacademy for CBSE class 10, what are you going to get? You are going to get daily live classes over there where you can engage with your educator, you can chat with the educator, you can have a discussion with the educator, you can have your evaluation through live tests and quizzes. The courses are covered in a very structured way and you get the unlimited access of all the recorded lectures, previously recorded lectures, so you can study at home with your ease, anytime, anywhere you can study. The live classes are taken by the top educators and just in one subscription, all the subjects get covered. Okay, whether it is math, science, social science, English, Hindi, because you know in boards, all the subjects are equally important. You just need to download the Unacademy Learning app, CBSE Class 10. You need to select in Manage Goal and click on Get Subscription tab. And then you can go for 3-year, 2-year, 1-year subscription. And as far as my opinion is concerned, I would say that 3-year subscription is most economic, most affordable, and also it is going to help you in long run. Use the code RSYT to get 10% discount, and you can even redeem your credits and pay through EMI, UPI. There are so many options available. So let us start the topic. In nationalism in India, today we are going to study about Mahatma Gandhi. So Gandhian philosophy, these are the two very famous quotes of Mahatma Gandhi. Like if you'll go and Google what are the famous quotes of Mahatma Gandhi, you will come up with these two main important quotes. In a gentle way, you can shake the world. An eye for an eye ends up making the whole world blind. Yes, this is what Mahatma Gandhi taught us, that you can shake the world in a gentle way. You need not always use the physical force. You need not to be violent all the time. And also we are not supposed to always think in a way कि जैसे को तैसा. ये philosophy life के अंदर नहीं होनी चाहिए. जिसने जैसा आपके साथ किया आपको भी वही करना है. This should not be the philosophy. And yes, Gandhiji gave us the blueprint of today's world, the blueprint of today's weapon with which we can change the whole world. That is, he gave us the idea of truth and non-violence. He was the champion of truth and non-violence. His beliefs basically got inspired through the Hindu and Christian religion. So he was inspired from both the religions, Hindu and Christianity. Non-violent resistance to end injustice, Satyagraha, truth, force, convert the wrongdoer. So these are basically his two principles, that is non-violence and Satyagraha. Inspiration, so he was inspired by Hindu religion for non-violence, and from Christianity he took up the inspiration that you should love your enemies as well. Okay, so these are the two principles of his life which are inspired by the two religions, Hindu and Christianity. Okay, so why this is important? To understand Gandhi even better, we should know that what his principles were. Okay, so he was often called Mahatma Gandhi, and the title Mahatma was given by the Nobel Prize winner Rabindranath Tagore. He basically conferred him this title, Mahatma. Mahatma means great soul. Now this very simple skinny person
came to India and he shook the whole British Empire and made them enforce them to leave our territory. And he brought India independence. Basically, India ko आज़ाद ही गांधी जी ने कराया. Okay, so let us quickly tell you the part of his story. So I will start with his early life, then I will take you to his life in London, then I will teach you about his life in South Africa, and then how he came to India and his idea of Satyagrah, which is there in your book in Nationalism in India. Okay, तो हम ये सब कुछ पढ़ेंगे so that हमें काफ़ी clarity मिल जाए. So first of all, a brief introduction about Gandhiji, that he was born on 2nd October 1869 and he died in the year 1948. So basically he had got a very good life span. इसमें उन्होंने काफ़ी कुछ किया. He was born in पोरबंदर, गुजरात. उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, माताजी का नाम था पुतलीबाई गांधी, and he got married to कस्तूरबा गांधी. He was a lawyer, politician, activist, and above all, he was the torch bearer. Okay, so he was a Hindu by religion. He practiced ahimsa, and he is the main person who basically led the whole freedom struggle in India. So how was his early life? Let us have a look at it. Very quick look at it. So he was born in 1869, as I've already told you, but his father was the Prime Minister of Porbandar. So you can see that he belonged to a very well-off family. Karamchand Gandhi and Putlibai Gandhi, they both of them were like quite rich, and they were well-off. They belonged to a well-off family. So Gujarat is one of the western states of India, and in Gujarat only, Porbandar is the place where he was born, and his father was the Prime Minister, and he basically was the Porbandar area was one of the Kathiawar agency of British India. Okay. Now kids, here you can see ये है हमारा पोरबंदर, यहाँ पे located है गुजरात के अंदर. ठीक है. So as far as caste is concerned, he belonged to a high caste family. Okay, so he himself never has got the first hand experience of untouchability, but you will see that how he started realizing the unfairness of caste system in a very young age. Okay, तो पोरबंदर जो है वो मॉडर्न पोरबंदर आपको कुछ ऐसा दिखता है बच्चों. So at the age of 7 only Gandhiji started realizing the faults and unfairness of the Indian caste system. Because when he used to go to the school, he used to see that many of his friends or many of the people were not even allowed to enter the school. Okay, so he said once, our struggle does not end so long as there is a single human being considered untouchable on account of his birth. See, accident of birth is something which is not in the control of humans. And on the basis of birth, if you are categorizing people like untouchable, high caste, low caste, then it is obviously not going to help a country to develop. Okay, तो बहुत young age में ही उनको ये जानकारी थी, उनको ये awareness थी कि ये जो untouchability है, this is not a right practice. Okay. Then as a teenager, he got married very early. At the age of 13 years old only, he got married to Kasturba Gandhi, and then they had 4 sons. And later on you will see that he goes to London. ठीक है, तो अब गांधी जी लंदन जब जाते हैं 1888 में जाते हैं, और वो सिर्फ मात्र 19 साल के थे जब वो लंदन जाते हैं. ठीक है, तो एक टीनेजर है, जब वो कोई नई जगह पे जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ की लाइफ को अडॉप्ट करने की सोचेगा, राइट. So he was also highly influenced with the English culture, and initially he also wanted to become an English gentleman. Okay, but then he realized that it is going to cost me a lot if I'll just keep on practicing their life, and if I'll try to copy their lifestyle, it is going to cost me a lot. So he started cutting down his expenses, and then he started following that whole Hindu religion. He started going back to his roots. तो 1888 में गांधी जी जो हैं वो इंग्लैंड जाते हैं. वहाँ पर उन्होंने बैरिस्टर के लिए पढ़ाई किया होता है, लॉ के लिए पढ़ाई किया होता है. नाउ किड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे 29 सितंबर 1888 ही गोज़ टू लंदन. देन पहले तो वो विक्टोरिया होटल में रहते हैं, देन वेस्ट कैनिंगस्टन में वो शिफ्ट हो जाते हैं,
At first, he tried to become English gentleman, but after a few months realized that he had to cut his expenditure and gave up most of his new habits. उनकी कुछ न्यू हैबिट्स में बॉल रूम डांसिंग भी था. ही ट्राइड टू लर्न द बॉल रूम डांसिंग विच वॉज लाइक पर्टिकुलर विक्टोरियन स्टाइल का एक कल्चर है, डांस होता है. ही ट्राइड टू ड्रेसअप ऑल्सो इन द विक्टोरियन स्टाइल. वो पूरा जो सूट होता है वैसे ड्रेसअप करने की कोशिश की उन्होंने. और उन्होंने लॉ के साथ साथ लंदन का मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम भी पास किया. एंड ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 12th June 1891. So in 1891, he returned to India and he started practicing law. But kids, actually his career was not that well off in India. यहाँ पे इंडिया में उनका बहुत ज़्यादा उनको कुछ बोल सकते हो सक्सेस नहीं मिला इस फील्ड में. सो ही ट्राइड टू गो टू साउथ अफ्रीका. ठीक है, अब साउथ अफ्रीका जब जाते हैं गांधी जी, ही गोज़ देयर इन मई 1893 में जाते हैं. एंड वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने दादा भाई नौरे जी जो हैं उनका केस लड़ने के लिए जाते हैं साउथ अफ्रीका में. ठीक है, तो ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है. वहाँ पर ये छोटा सा जो आपको सबसे साउथ में जो कंट्री दिख रही है दैट इज़ साउथ अफ्रीका. So Gandhiji had arrived in Africa in May 1893, a 23-year-old barrister with an unsuccessful career in India. He had accepted a 1-year assignment with a modest salary to assist the lawyer of an Indian merchant in Natal, hoping to find better prospects in the new land. Natal was this area, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका है, उसमें यहाँ नाटल है जहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस थे और बहुत सारे इंडेंचर्ड लेबर जो हैं वो यहाँ जा कर के अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद ट्रेड करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने. सो ही थॉट कि यहाँ पर अगर मैं अपनी कंपनी खोलता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे, दो मेरी सैलरी यहाँ पर कम है बट देन आई हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. ओके, तो यहाँ जा कर के उन्होंने अपना खुद का लॉ फर्म स्टार्ट किया, MKG, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी अटॉर्नी. तो हियर यू कैन सी दैट ही इज़ ड्रेस्ड अप इन अ वेरी फैंसी ड्रेस, जो विक्टोरियन सूट होता है पूरे इंग्लिश कल्चर से आपको यहाँ पे दिख रहा है. गांधी जी तैयार हैं. ठीक है, और ये इनकी कंपनी है. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस इन अफ्रीका. सो ही वाज ट्रैवलिंग टू प्रिटोरिया सून आफ्टर हिज अराइवल इन डर्बन. He has thrown off a train, assaulted by coachmen and denied a hotel room in Johannesburg, all because of his color. These assaults on his dignity and the knowledge of humilities faced by Indians did not dishearten him, but brought out of the best in his personality, a strong sense of duty and an urge to serve humanity. He decided to dedicate himself to public service, settled in South Africa. तो उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर बच्चों. बड़ी ही मज़ेदार कहानी है. गांधी जी जो हैं वो पहले से ही टिकट बुक करा लेते हैं और पोस्ट के थ्रू टिकट अपनी मंगा लेते हैं. पोस्ट के थ्रू जब उनको टिकट भेजा जाता है साउथ अफ्रीका का तो ऑब्वियसली उनका कलर कहीं पे भी नहीं पूछा जाता है. So he took the first class ticket and he went into the coach. He started leaving for Pretoria, okay, soon after arriving in Durban. और वहाँ पर कोच आकर के इनको बोलता है कि आप ब्लैक कलर के हो, आप फर्स्ट कोच में ट्रैवल कर ही नहीं सकते हो, यू आर सपोज टू जस्ट लीव दिस प्लेस आफ्टर द स्टेशन कम्स. बट ही डिड नॉट लीव. तो नेक्स्ट स्टेशन पर उनको बाहर फेंक दिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डर्बन है एंड दिस इज़ प्रिटोरिया. सो ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम डर्बन टू प्रिटोरिया. ठीक है, तभी ये हादसा होता है. नाउ ही डिसाइडेड कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादती हो रही है हमारे इंडियंस के साथ. यहाँ पर नाटल जो प्लेस था जहाँ पे ये रह रहे थे, ये जो नाटल प्लेस मैंने आपको बताया, वहाँ पे लगभग 50,000 इंडियंस थे. ठीक है, जिसमें से 30,000 तो फ्री इंडियंस थे और 30,000 वर फ्री इंडियंस एंड दे हैव कंप्लीटेड देयर इंडेंचर एंड देयर चिल्ड्रन एंड 5,000 बिलोंग टू द ट्रेडिंग कम्युनिटी. और 5,000 लोग ऐसे थे जो ट्रेड करते थे. ठीक है, एंड इंडियन कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया नाटल. But around the time of Gandhi's arrival, the white authorities began to impose measures to deprive Indians of elementary rights. They felt the existence of free Indians would undermine white hegemony. They removed the voting rights of few Indians who had qualified. They began to refuse trading licenses to Indians. तो नाटल में जो इंडियंस अब बस चुके थे उनसे वोटिंग राइट ले लिया गया, उनसे ट्रेडिंग राइट्स ले लिया गया. So on 22nd May 1894, Gandhiji established the Natal Indian Congress. So he established Natal Indian Congress so that he can basically protest Africans in a very, you can say, in a very organized way.
ठीक है, तो इस तरीके से इनकी जो पॉलिटिकल करियर है साउथ अफ्रीका में स्टार्ट होती है बच्चों. एंड देन 1904 में इन्होंने अपना फोनिक्स फार्म बनाया. देन ही इवन started teaching kids about नाई तलीम. नाई तलीम is kind of education जिसमें vocational education भी दिया जाता है. He started teaching students how to mend shoes, how to learn some of the vocational trainings and spinning cotton. And then in 1909 he also wrote हिंद स्वराज. ठीक है, 1909 में इन्होंने बहुत फेमस बुक हिंद स्वराज भी लिखी. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इनका बहुत एक्टिव पॉलिटिकल करियर रहा और इन्होंने साउथ अफ्रीका में काफ़ी सुधार कराए. इंडियन ओपिनियन इनकी न्यूज़पेपर थी. देन हियर यू कैन सी दैट गांधी जी इज़ इन द प्रिजन क्लोथ्स एंड ही वर्कड रियली वेल ओवर देयर फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक्स. नाउ ही रिटर्न टू इंडिया इन द ईयर 1915. वाई सो? देखो, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 में, जस्ट उसके 2 दिन बाद ये लंदन गए थे. ठीक है, अपने इनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे मिलने के लिए. एंड ही शोड हिज इंटरेस्ट दैट आई वांट टू कम बैक टू इंडिया एंड आई वांट टू बेसिकली नो दैट हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन ओवर देयर. तो 1915 में ये फाइनली 9 जनवरी 1915 को इंडिया आते हैं. After spending 21 years of his life in South Africa, and 9th January is now celebrated as NRI Day. And then when he came back to India, he visited Gopal Krishna Gokhale and he started his career along with under the guidance of Gopal Krishna Gokhale, जिनको ये अपने mentor और guide भी मानते थे. उन्होंने अपनी दोनों books में उनका mention किया है, The Story of My Experiments with Truth and हिंद स्वराज में. So in India he practiced Satyagraha. ठीक है, अब सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह इज होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ. सत्य एंड आग्रह. सत्य मतलब होता है सच और आग्रह मतलब होता है रिक्वेस्ट. सत्याग्रह इज एन आइडियोलॉजी जहाँ पे सत्याग्रही क्या बोलता है ऑपरेसर को कि तुम सच को देखने की कोशिश करो. ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है. एंड देन इन साउथ अफ्रीका में ही सत्याग्रह जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया था. और मीडिया जो थी साउथ अफ्रीका की वो सत्याग्रह को पैसिव रेजिस्टेंस के नाम से बुलाती थी. ठीक है, बट एक्चुअली में गांधी जी ने बोला कि ये पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक एक्टिव रेजिस्टेंस है. ओके, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. अगर कॉज सही है और जब तुम जो बात तुम कह रहे हो वो सही है तो तुमको सामने वाले को रियलाइज कराने के लिए कोई फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है. सत्याग्रह इज़ नॉट अ फिजिकल फोर्स. अ सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन. एक सत्याग्रही जो है वो दर्द नहीं देता सामने वाले को. ऑन एडवर्सरी ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन. वो सामने वाले का कोई डिस्ट्रक्शन भी नहीं चाहता है. इन द यूज़ ऑफ सत्याग्रह देयर इज़ नो इल विल. जब भी हम सत्याग्रह यूज़ करते हैं तो हम सामने वाले के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचते. ठीक है, हम क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सामने वाला जो सच है उससे रूबरू हो जाए और सच को जान जाए. ठीक है, तो महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस. ही सेड दैट नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्मा. अहिंसा परमो धर्मा. ये जो बात है ये इन्होंने गांधी जी की बहुत ज़्यादा बोल सकते हो फेथ था इस टर्म में कि अहिंसा जो है वही सबसे बड़ा धर्म है. ठीक है, और इंडिया जो है, इंडियन जो है वो कभी भी वॉर गॉड्स को प्रे नहीं कर सकते जैसा कि सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ करती हैं. वो मिसाइल बना रही हैं. उस टाइम पर यही हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था. लेकिन गांधी जी ने कहा कि इंडियंस कभी ऐसा नहीं कर सकते. हमारे लिए नॉन वायलेंस ही सुप्रीम धर्म है और ट्रूथ जो है वो हमारे इंडिया के हर पर्सन के सोल में बसता है. ठीक है, सो द सोल इज इन्फॉर्म्ड विद द नॉलेज. ही सेड दैट सत्याग्रह इज द प्योर सोल फोर्स. ठीक है, एंड देन ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट पॉलिटिकल करियर और फर्स्ट पॉलिटिकल मूव फ्रॉम चंपारण. चंपारण में उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स जो हैं उसके अगेंस्ट में, इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में सबसे पहले सत्याग्रह किया. सत्याग्रह में कहीं पे भी उन्होंने एक्चुअली में कुछ भी ऐसी बात नहीं कही थी कि तुम्हें सच बोलना है या ऑपरेसर. मतलब बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर जो सत्याग्रह का फंडा है वो पूरा का पूरा नहीं लगाया गया था. बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 1917 में चंपारण में ही उन्होंने सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल करियर की स्टार्ट की और वहाँ पर लोगों के अंदर से एक डर जो है वो ख़त्म किया
कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको सामने जा कर के बोलना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन चंपारण सत्याग्रह वॉज वेरी सक्सेसफुल लेटर ऑन. The satyagraha happened in Khera also for the crop failure and it also went successful. Then again एक सत्याग्रह होता है अहमदाबाद में 1918 में वेज रिडक्शन के लेकर के, वो भी सक्सेसफुल हो जाता है. फाइनली अमृतसर में रॉलेट सत्याग्रह होता है. रॉलेट एक्ट जो कि एक बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव एक्ट था उसके अगेंस्ट होता है. एंड ये वाला जो सत्याग्रह है 1919 वाला, इट वेंट रॉन्ग और इसके बाद जालियांवाला बाग मैसेकेयर होता है. एंड दिस इज़ हाउ द सत्याग्रह मूवमेंट एंड्स एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट्स कमिंग इन टू द वे. ओके, आई थिंक ये बहुत ही शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन था गांधी जी के अर्ली लाइफ के बारे में और सत्याग्रह के बारे में. आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा. आप इमोटिकॉन के थ्रू भी बता सकते हो दैट हाउ वाज द लेक्चर, क्योंकि कहीं पे भी बुक में साउथ अफ्रीका के बारे में नहीं है, इसलिए ये बताना ज़रूरी था आप लोगों को. Okay kids, so you can also after the discussion of this topic you will get a DPP on the based on this discussion which will be purely based on CBSE. आपके nationalism in India के basis पर DPP मिलेगी आपको इस channel पे. So go and follow this channel. And if you have liked this video, if you really like the content, please give a thumbs up, subscribe to our channel, hit the bell icon and don't forget to use the code RSYT whenever you take the subscription. Thank you so much, kids.